Very good afternoon and good evening, students. Let's get started with the session. Kanishk, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. How do you read? Mumbai ground, Victor Tango Kilo Alpha Papa, read U5. How do you read? कौन पूछेगा? How I do you read read? U5. मैं जवाब ही कैसे दूं फिर? Very good. Don't forget anything. Recenter yourself, Kanish. Recenter yourself. Just recenter yourself. Everything will come to you. Don't be nervous. Follow the training. Any questions, Kanish, before we start? Negative, sir, Victor Tango Kilo Alpha Papa. Negative questions. Victor Tango Kilo Alpha Papa. Negative Victor Tango Kilo Alpha Papa. Kicker. Okay. So students, the first assumption with respect to simulation is this, that we all are waiting in the exam room and we are waiting for our roll number to be called in. So Kanish will be called in. We'll assume we all are being called in and we'll assume he's settling down and he'll be given a paper. Everybody, I hope, has a copy of charts. Although I'll also put up the charts on the screen. The moment the paper is uploaded on the screen, the student giving the exam would be told that you can start transmitting, and that's when your timer starts. Remember, when it is told to you that start transmitting, it means your timer has begun and you can take your time to start with your first call, always. Otherwise, mistakes happen when we don't apply the strategy of taking the first call accurately. Observers, what will you do? Observers will ensure you write all the log, that you listen properly. You'll write the flight plan. Along with the answers given by the student, you will also be writing parallelly your calls. And once the session is done, you'll be sending me your doubts, your corrections, and your feedback. Today's feedback will only be there with respect to the student giving the exam. Anybody having any questions will be allowed to speak afterwards, so you can stay till the end of the session. All right. We're going to keep it spick. What is the word? Uh, Spick and span, something like that. Quick. We'll keep it quick, and we'll keep it just with respect to what we are supposed to do and nothing else. Observers, please no cross talking in between, and please don't interrupt anyone. Keep your microphones on mute. Otherwise, also it's on mute, but otherwise also keep it on mute. Don't disturb, just observe, learn, and your learning should be with respect to, okay, so this is our mock test, this is how the exam will be, this is how my performance should be. In the end, your thinking should be, what have I learned, instead of what went wrong by Kanishk or what went wrong by someone else. Remember. And students who are going to give RT in Feb and April, if you've not notified me, notify me. Secondly, Yamuna and Niharika, I'm glad you're here in session right now, but you're not even requesting for link and you're not there for tech also, and you're not telling me also. It's fine though, I don't mind. But why? What if I had forgotten to send you a link? Don't do that, students. Don't miss a session if you're not busy. Okay. Aditya is here, very nice. Om is here, Jyotsna is here, Prerit and Kanishk, obviously. Prerit, thoda rest le lete, break le lete. Jyotsna was here, but I think, yeah, Jyotsna abhi break le lete. Niharika, good, but Niharika, come on. Some feedbacks are given to you. I would want to see how you're doing, what you're doing. Message me your exam dates, please. Students in Delhi, please give me your exam prep attempt quickly. Bhagat is here, very nice. Hussain and Khalil is joining in, Prakhar is joining in, Jason is here, and Alpha is Arpit. Arpit, I think you have a call sign. Rename yourself on Zoom for the call sign. Students who can keep their faces on, guys mainly, if you could just do it. Videos on 4-5 तो करो एक बार. अब मुझे ये देखना है कैसा लगता. मुझे देखना है इसमें अगर हम एक्चुअली लोग एक दूसरे का मुंह देख सकते हैं कि नहीं.
आप लोग, हाँ ये अच्छा लग रहा है ना खलील, नाइस टू सी यू। ये तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है तुम्हारे मुंह के सामने, ये कैसे हटाते हैं नाम? बिल्कुल, इसको बड़ा कर सकता हो क्या? हाँ, ओ वाओ, नाइस। क्या टेक्नोलॉजी हो गया है ना, अमेजिंग। दिस फील सो गुड। मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे बीच में, मुझे सामने आना चाहिए। हुसैन, ओम, आदित्य। आदित्य, मैं तो शायद पहली बार ही देख रहा हूँ तुम्हें। वेरी नाइस टू सी यू। लविंग द एनर्जी ऑफ पिकिंग अप, ओके, वेरी नाइस। प्रेरित इज हियर। भाई ये एयरक्राफ्ट क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स में हमारे? 380 लग रहा है मुझे। प्रखर लेके बैठा है। ठीक है प्रखर, उड़ाओ प्लेन उड़ाओ। अर्पित इज हियर। अर्पित, नाइस टू सी यू, सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम। नाइस हेलो नाइस सर। नाइस। यस। ओके, गुड 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 गुड। इंटरेस्टिंग है दिस इज। एक और वाला। One quick doubt. वन क्विक डाउट, बेच रहे हो कि खरीदना है? So I want to ask. अच्छा, पूछो ना फिर। So in yesterday's lecture, you said to speak to the interviews RTR. Uh, you guided us everything, and you said to write at what stage you are at your flying career. So if I've completed papers and only RT is remaining, so will I be at ground paper stage or what stage? Ground study stage. RT is a part of your ground studies, nothing else. Simple. हमें समझना है टेक, रेग्स, मैट, नैव एंड आरटी इज जस्ट नथिंग बट माय ग्राउंड स्टडी फेज। आई एम वेरी स्मार्ट स्टूडेंट। आई नो ये सब ग्राउंड में ही आना है। सिंपल। वैसे भी एसपीएल करूंगा तो मेरे को एफआरटी तो लोग कराएंगे ही। इससे अच्छा आरटी हो, भले ही तुम्हें फॉर्मेलिटी के लिए वो लोग कराएंगे, बट जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअली, बिकॉज यू हैव अ हायर लाइसेंस। बट वो तो उनको क्या है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है तो सब करते रहता है। सब ब्लाइंडली जाते हैं, कोई लॉजिकल जाता नहीं। या कितना अच्छा लग रहा है हुसैन सुन के कि यू आर डन विद एवरीथिंग एंड यू विल बी डन विद योर आरटी आल्सो। स्टूडेंट्स, अप्रैल एंड फेब एट टाइम मैसेज कर दो फटाफट, ठीक है? चलो। निहारिका, दिस वीक आई वांट अ प्रैक्टिस मॉक विथ यू। मुझे टाइम दोगे आप? अभी मैसेज लो। ज्योत्सना, ठीक है, जस्ट लेट मी नो व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कनेक्टिंग अगेन फॉर योर मॉक। प्रखर, आपने मुझे पार्ट 2 का दे दिया है। ठीक है प्रेरित, आप टेंशन नहीं लोगे, आपका सब चल ही रहा है। उसके अलावा किसी ने मुझे मैसेज नहीं किया है। Anybody who is not understanding Hindi in the session right now, let me know so that I talk to you in English also. ठीक है? All right. Okay. Good. Okay, Arpit. Okay, Om. Very nice. All right. मैं एक और ट्राई कर रहा हूँ बस, and then we'll get started with the mock. Understand, observers जितने भी हैं म्यूट पे रहेंगे, पूरा कॉल लॉग लिखेंगे एंड खुद के कॉल्स भी बनाएंगे एंड मुझे अपने नोट्स भेजेंगे। जो भी डाउट्स है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट यू आर लर्निंग, you will note it towards the end of Kanishk's feedback. I'll be open to your questions, but we'll be in a rush, so we'll not be wasting time. And don't expect pravachan on the same things again and again. ये टेक्निक वो टेक्निक ऐसा वैसा एक बार बोल दिया है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू गो थ्रू। एनीबडी हु हैज नॉट गॉट गॉन थ्रू द टेक्निक बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चन नंबर 1 on your part 1 viva, let not part 1 viva, part 1 paper, please let me know, sir. I'm not gone through those instructions and I'll talk to you individually about that. Hmm. ये भी अच्छा है। चलो, ठीक है। यू कैन गो बैक ब्लाइंड एवरीवन, ओके। थैंक यू फॉर दैट सिमुलेशन। कभी करेंगे हम लोग, कोई अलग सेशन होगा तब करेंगे वापस। मुझे अच्छा फील आया ना, चलो सब क्लास में बैठा है। मैं तो बहुत डेस्परेट हो गया हूँ क्लास में पढ़ाने के लिए आप लोगों को। नॉट दैट आई स्टॉप डूइंग ऑनलाइन, बट प्लीज प्रे दैट सर जो चाह रहे हैं वो हो जाए विद रिस्पेक्ट टू यू नो रेजिंग अप दी ऑफलाइन स्टडी सेंटर फॉर एवरीवन। वो हो ही जाएगा तो इतना मजा आएगा ना, बस आपको कुछ हो ना हो मेरे पास आके बैठ जाया करो वहां पर, बस। ऑब्वियसली बॉम्बे में होगा, बट बहुत स्ट्रगल आ रहा है, पता बहुत। जस्ट प्रे फॉर मी, ओके। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। सो
You are all in the waiting room. And now the moment question paper is uploaded, 1 second pehle, Kanish will be called inside. Kanish will be on unmute, but keep it blind and we'll get started. So we are in the waiting room. Imagine that. आप लोग को टाइम नहीं देखनी है. Remember, nobody is going to look at the clock.
Ganesh, please come in the exam hall. Ganesh, if you assume that you have come and sat down, bolo, sir, I have arrived. Sir, I have arrived. Okay. You can start transmitting. All right, you can start transmitting, okay?
Transmitting for question number 1 Alpha. Delhi ground Air India 90852 stand Bravo 8 aircraft Airbus 320 heavy passengers on board one niner information Zulu security check cleared request startup on priority due human organ transplant on board IFR Delhi to Chennai. Air India 90852 Delhi ground. Confirm if ready for expeditious handling. FM ready for expeditious handling. Air India 90852. Air India 90852 Delhi ground. Startup approved. Report when ready for taxi. Kindly expedite. Startup approved. Wilco will expedite. Air India 90852. Roger. Delhi ground. Go to the next question. Transmitting for question number 1 Bravo. Delhi ground Air India 90852. Request taxi instructions. Kindly expedite due human organ transplant on board IFR Delhi to Chennai. Air India 90852 Delhi ground. Clear to taxi to runway 28. Taxi via taxiway November 1
turn left for taxiway Sierra, continue straight, hold short, runway 28, report region. Clear to taxi to runway 28 via taxiway November 1, turn left for taxiway Sierra, continue straight, hold short, runway 28. Wilco, Air India 90852. Go to the next question. Transmitting for question number 2. Delhi Control, Air India 90852, 25 nautical miles, inbound Kalna. Position report. Air India 90852. Estimating Bucklow 0410, VOR Bravo Papa Lima 0430, Tamid 0445, VOR Hotel India Alpha 0500, Bodel 05, correction, Bodel 0510, ETA Chennai 0530. Present position 25 nautical miles, inbound Kalna. Route Whiskey 20 South,
radial 193, flight level 310. Go to the next question. Transmitting for question number 3 Alpha. Hyderabad Control, Air India 90852, over Busbo, received bad weather, disregard, pan, all aircraft, in the vicinity of Busbo, Air India 90852, negative contact with ATC, received bad weather warning over VOR Hotel India Alpha, deviating on own, will turn right for 15 nautical miles at 10 nautical miles, will climb 300 feet and maintain flight level 313, will fly parallel on deviated track, route Whiskey 20, all exterior lights switched on, keep a lookout, aircraft Airbus 320 Heavy. Go to the next question. Transmitting for question number 3 Bravo.
Hyderabad Control, Air India 90852, negative contact with ATC, had deviated on own at 0410. Time now 0420. Position parallel on deviated track Whiskey 20, northeast of VOR Hotel India Alpha. Request rejoining route Whiskey 20, aircraft Airbus 320 Heavy, passengers on board 19er. Air India 90852, Hyderabad Control, weather over Hyderabad still bad. Confirm intention. Weather over Hyderabad still bad. Go to next question. Transmitting for question number 4. Pan 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 pan. Chennai Tower, Air India 9852, experienced loud noise below cabin on landing. Request firefighting services and medical services on standby. Passengers on board 19er. Go to next question.
Question number Question number 5. 5. Kindly expedite. Aeronautical information services. Next. Centerline. Next. Alert situation. Next. Inbound. Next. Upper traffic area. Okay. Submit your logs. You can send it on WhatsApp. Finish paper, logs. It's okay if you don't send me PDF. So sent you. Okay. Ganesh, how was the experience? Sir, I got nervous. So I did few mistakes, and in few calls I just forgot everything. Mine got blank, Mm-hmm. and I require my, like, I was too slow. For That's what I felt. Mm-hmm. So, what did you think went wrong with respect to your performance? You said you made some mistakes. So, what do you think? Nervousness. No, not why. What did you miss technically? What mistakes did you make? Mistakes. Like, in essential information, I have to give route, radial, flight level in calls. Mm-hmm. So I did not mention it. Mm-hmm. What else? How's the paper? How's the flight plan? Were you able to understand the flight plan? Affirm, sir. What about situations? Situations, I could not understand question number 2, Mm-hmm. and in question number 3, Bravo, when you said confirm intention, like, I could not understand what to say after that. Mm-hmm.
what did you understand about all situations? If we have to just think about what is happening, question number 1, 2, 1 alpha bravo, 2, 3, B, A, B, and 4. So question number 1, self-explanatory. I think it's startup on priority, which I think you did right because it was human organ transplant on board, and by yourself you said on priority. That was very nice. So no mistakes there. Your call was crystal clear, accurate, correct. Everything is perfect over there. When we think about obtaining taxi clearance, your call was very good, but you gave a couple of extra pointers into that. Those extra pointers were standard. Yeah. Obtain taxi clearance, your call was good, but you didn't have to say kindly expedite and you didn't have to say IFR from year to year because it's already there in startup. Right? Taxi calls are pretty simple. Ground, W1, W2, ready for taxi, request taxi clearance. Simple. Or request taxi clearance. That's it. Couple of pointers are extra, but it's fine. It's good to be cautious about kindly expedite. I have human organ transplant on board. But remember, ATC is ready to give it to you. So there's no logical point of you instructing ATC to give it to you unless they give you a delay. So that was not the case. अब अच्छा कर रहे हैं तो परफेक्ट ही करते हैं ना, क्योंकि आपके पास और कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है नहीं, तो आपने बहुत अच्छा करा यहाँ पे भी। तो इसको बस समझ में आना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, उसके फर्स्ट क्वेश्चन में एटीसी ने मुझे बोला था कि रिपोर्ट में रेडी फॉर टैक्सी, एंड उसमें भी मैं बोल सकता था, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने आपको गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे लोगे, सेम रिक्वेस्ट होगा। सिंपल, दिल्ली ग्राउंड विक्टर टैंगो करेक्शन, दिल्ली ग्राउंड एयर इंडिया 90852 रेडी फॉर टैक्सी, रिक्वेस्ट टैक्सी क्लियरेंस, और दिल्ली ग्राउंड एयर इंडिया 90852 रिक्वेस्ट टैक्सी क्लियरेंस। बस हर कॉल में प्रायोरिटी नहीं बोलना है because you've already gotten priority and it's the same ATC. If you're changing from ground to tower, ATC already आपके बारे में बता चुका होगा ग्राउंड टावर को, आपको सिर्फ क्लियरेंस लेंगे, आप उनको स्पेसिफाई कर सकते हो, यहाँ पे जरूरत नहीं है। सो 2 पॉइंट्स मिनिमाइज भी कर दोगे, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा था वो कॉल, फिर भी रीडबैक काफी अच्छा था, परफेक्ट था रीडबैक, ऑलमोस्ट परफेक्ट, गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगा आप रिपोर्ट रीचिंग मिस करोगे, बट आपने नहीं मिस किया, सो आई वाज वेरी हैप्पी। मैं चाहता तो कंप्लायंस भी दे सकता था, बट जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है आपको। एग्जामिनर अगर गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बोलता है ऑब्टेन टैक्सी के टाइम, तो आपको कंप्लाई भी खुद से करना है। स्टूडेंट्स, नोट ऑन दिस पॉइंट दैट फॉर एनी क्वेश्चन where clearance is given to you and then go to next question is not said to you, then you by default comply with that clearance. Here that is not the case, but could have happened, so be open to that possibility also. So far so good, अच्छा किया आपने बहुत। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो थी ये नहीं चाहिए थी, दिल्ली ग्राउंड एयर इंडिया 90852 रिक्वेस्ट टैक्सी क्लियरेंस, बस स्पेसिफिक रख दो, ये सब मेरे को कुछ जरूरत नहीं है बोलने की। तो मेरा कॉल यहाँ थोड़ा छोटा हो जाता है, टाइम का कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपने सिर्फ 15 सेकेंड एक्स्ट्रा लिए हैं, आपने यहाँ तक पूरा टाइम पे खत्म किया पेपर। क्वेश्चन नंबर 5 3 पर, ठीक है, उस पर भी आई एम नॉट श्योर आपने करेक्ट आंसर दिया है, मुझे प्रेरित डेफिनेशंस में देख के बताएगा, हुसैन देख के बताएगा डेफिनेशंस में। हर किसी ने जिसने कल सीखा है पार्ट 2 आया हुआ डेफिनेशंस कहाँ से देखने हैं, वो मुझे अलर्फा का जूम चैट बॉक्स में अभी सब डेफिनेशन देंगे, कनिष्क को छोड़ के। अभी के वी आर 13 ऑफ स्टूडेंट्स, उसमें से 12 स्टूडेंट्स मुझे देने चाहिए अलर्फा का कॉपी पेस्ट आंसर, कॉपी पेस्ट फ्रॉम द डेफिनेशंस, खुद के वर्ड में नहीं चाहिए, एब्रीवेशन चाहिए यहाँ मुझे, एब्रीवेशन, ठीक है। एंड यूटीए तो चलो, यूटीए का भी एब्रीवेशन चाहिए, सो फिनिश के अलावा सब लोग मुझे वो देंगे, ठीक है, ओके। सो टाइम का इतना कंसर्न नहीं है, अंडरस्टैंड, पहले प्रैक्टिस मॉक में मुझे एक्यूरेसी चाहिए, एंड आपको जितना टाइम लेना है लो,
हम टाइम पे कब काम करेंगे? जब हमारे पास एक्यूरेसी आ गई है। नेक्स्ट मॉक पे थोड़ा फास्ट हो जाएंगे, एक्यूरेसी की टेंशन नहीं है, थोड़ा फास्ट हो सकते हैं, टाइम अपने आप बच गई। टाइम का टेंशन फर्स्ट मॉक, सेकेंड मॉक, थर्ड मॉक में नहीं लेना है, एग्जाम में भी नहीं लेना है। वाई? अगर आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस एक्यूरेट है एंड आप पेपर नहीं खत्म कर रहे हो, इफ आर एबल टू स्कोर 50-55 ऑन द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, यू आर गुड टू गो फॉर पार्ट 2। तो पेपर कंप्लीशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है as long as you are scoring 50-55 on 3 questions accurately. If you are scoring 50 on all 5 questions, with every question accuracy just 10 marks, 10 marks, 10 marks, 10 marks, 10 marks out of 20, 20, 20, then that 50 will not help you go through part 2, because although you got passing marks, you have bad accuracy there. Students understand it's not quantity, it's quality right now. Passing is 50, but with quality, 3 questions. Also, if you on a bad day are not able to finish, but वो आएगा ही नहीं अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस मॉक कर लोगे। तो आज कनिष्क का आ सकता था अगर आज कनिष्क की एग्जाम होती, फिर भी उसने लास्ट के 8 मार्क ही मिस किए होते वहां पर, तो उसको पासिंग मार्क्स लाने होते 92 में से, तो वो 8 मार्क चले जाते जो इजिली स्कोरेबल है, एब्रिवेशन क्वेश्चन नंबर 5। बट कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज मेरे को मेजर चंक क्या है, क्वालिटी ऑफ ईच का। इफ एवरी कॉल आई एम मेंटेनिंग 70% क्वालिटी, आई एम गुड टू गो, इवन इफ आई एम डूइंग 3 क्वेश्चंस कंप्लीटली। तो टाइम का इश्यू नहीं है, डोंट जज योरसेल्फ, इतना ही मिस हुआ है, नेक्स्ट मॉक में अपने आप कवर हो जाएगा। राइट नाउ व्हाट यू डिड इज एक्सीलेंट। कुछ चीजें मिस हो गई, वो होनी है, इसीलिए हम प्रैक्टिस मॉक करते हैं, बट आपने जो चीजों पे ध्यान दिया है वो बहुत अच्छा किया है। लेट्स कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 2। यू आर 25 नॉटिकल माइल्स इनबाउंड, कलना कालना जो भी है, ठीक है। बच्चे लोग आप मुझे अलर्ट फेस बोल रहे हो, कनिष्क आपने भी अलर्ट फेस बोला, मतलब ये सही हो जाएगा, ठीक है। यूटीए कौन बता रहा है मुझे? No, sir, negative. I said alert situation. तो वो रॉन्ग ही रहेगा फिर, कोई बात नहीं। यूटीए इज अपर कंट्रोल एरिया, देखो अपने नए वाले चार्ट्स में भी तो है यूटीए, कोई बात नहीं। यू ट्राई टू गो विद इट, यू मेड अ गुड गेस, आपने ब्लैंक नहीं छोड़ा, आई लाइक दैट, होता है सबके साथ होता है, कोई बात नहीं। यहाँ तो आपको इजीली 4 3 से 12 आ गए हैं, 12 नहीं भी आएंगे तो, क्योंकि अगर लास्ट का भी मैं मिनिमाइज करता आपको 8 तो आ ही रहे हैं आपको, सिंपल। लेट्स सी, यहाँ पे आपने जो करा है इतने अच्छे से, यू आर गेटिंग, बहुत अच्छा करा है ये, यू कैन इजीली गिव यू 9 on 10, 9er दैट इज, एंड टैक्सी का भी आपने बहुत अच्छा किया है, सो इजीली गिव यू 9er on 10। सो आप इजीली 18 लेके आ रहे हो, 90% ऑन द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, गुड जॉब। मैं चाहता हूं आपके फर्स्ट क्वेश्चंस में आप ऐसे ही स्कोर्स लेके आओ, एक्सीलेंट। When your first step in your strategy is perfect, you have done your job. You do the same for each question. You don't worry about anything. Right now, correctness and accuracy is our concern, and that is good. So let's come back to question number 2. In order to understand a question like question number 2, why are we confused? Obviously we are under pressure, or let's say that whatever, we are nervous, or it just doesn't click because it's not direct. But what could such questions be like? Position report, good guess. But मैं तो कालना पहुंचा भी नहीं हूँ, कालना पहुंचा ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों पोजीशन रिपोर्ट दूंगा? पोजीशन रिपोर्ट या तो मैं मैंडेटरी वे पॉइंट्स पे दे दूं, वीओआर पे दे दूं, कंट्रोल बाउंड्रीज पे दे दूं, एफआईआर बाउंड्रीज पे दे दूं, एफआईआर बाउंड्रीज पे दैट बिकम्स एफआईआर रिपोर्ट, वीओआर एंड ऑल। Here that is not the case. So what is the next best possibility is something I think. You went with the most probable possibility after the correct answer that I was expecting as a moderator, and I appreciate it. I was trying to give you a situation as a moderator with respect to that. Okay, you have, look at the chart, everyone. I hope you can see the cursor. So when you're coming from Delhi, so when you're coming from Delhi and when this is your route, understand your first waypoint or your second waypoint generally are where up to which your ATC clearance is given to you. And from there, you will go and proceed your normal navigation, which generally is based upon your autopilot or the flight plan. So generally reach up to the first waypoint, you are not actually on your route, but there are ATC clearances, the standard instrument departures, which help you
reach that particular waypoint from where you'll connect your route and then follow your flight plan. So that is what ADC clearance is all about. In this case, Kalna was your top of climb, and this was a climb call. The question didn't have hints, so you could have assumed passing from here to passing there, passing this for that. Here, if in the question I would have given you passing flight level 250, 25 nautical miles inbound Kalna, then probably you would have realized it's top of climb, and then you would have given me that call. So this was a climb call, but you took it organically and gave me a position report. And in that report, you said that you have reached flight level 310, which is the cruising altitude. So with respect to that, I can understand that it's an organic call. And here I have to understand whether the RT parameters are correct or not, because this is an RT exam. And with respect to that, I'll be giving you your assessment as a moderator. But you try your best and do the right thing is what we are looking for. And you did that, you maintained quality. You maintained quality with respect to giving me position report, and you gave a good position report. Just that time now is something that we can mention initial part of our call, time now. And generally, if we read instructions in the question paper, if a call has to be messaged as a specific time, that time should be written against the question number. Students, let me take this call. Emergency, don't mind. You know I don't take calls in class. जज नहीं करना. तो मैं इमरजेंसी होगी तो तुम्हारे लिए भी करूंगा, भले फिर मैं कुछ भी करूँ, मेडिटेशन भी करूंगा, छोड़ के तुम्हारे लिए आ सकता हूँ. Anyway, coming back, let's judge you on the position report call, very close to top of climb, but you justified saying that मैं वहां पहुंच गया हूँ. Benefit of doubt आपको ही मिलेगा because question में और कुछ दिया नहीं है. Now this is how organic these exams are, students. And I'm really happy that you stuck to the second best option to the top of climb call, nothing else. So that is good. TM ही भूल गया और कुछ नहीं भूला. भले ही आपने रेडियल बाद में दिया, चल जाएगा. TM ही भूल गए. TME should be with respect to the radial that you are using with respect to that VOR. So if you are using 1903 with respect to Delhi, तो Delhi से outbound DME चाहिए था मुझे यहाँ पे. यहाँ आपके 2 points lose होंगे. Why? Because in the instructions it's clearly given use of radial and DME is recommended, although it can be hypothetical, but we have been taught. So here we have missed on an important point that could cost us more marks on a bad day, which would be 5 elements for any call when we are in air. Route, flight level, radial, DME, estimates. So ये route, flight level, radial, DME सबसे पहली चीज आनी चाहिए आपके position report calls में. फिर estimates, फिर ETA. ये आपको practice कर लेना है. It's very simple. It's like memorizing something. It's just that blanks में memorize करना है. Flight plan and chart के हिसाब से वो blanks को fill कर देना है. The same strategy that I've given you yesterday in a part 2 Viva technique for introduction can be used here. तो उस हिसाब से आप कभी नहीं भूलोगे ये essential points. हमेशा पहला, unless it's a distress or urgency situation, if you are in air, you should be starting your calls with these 5 elements and then do anything and everything. If it's urgency and distress, you'll say where you are, then explain the urgency, then intent, and then give me additional position information. These are the only 2 ways how we will put in our position report values. So I don't mind. Call was good. Present position you specified, you remembered late, so I give you credit there also. Route you mentioned, radial you mentioned, flight mentioned, but radial with respect to what VOR. So that is partial. So when we say DME, we are justifying a radial also because radial DME are co-located. VOR. So here logically situational awareness a little bit is missing, which of course your nervousness during first time is happening. Remember a radial without DME, we don't know तुम कौन से VOR से tuned हो भाई, कहाँ से ऐसे पूछेंगे आपको. आप ज्यादा मिस्टेक करोगे तो एग्जामिनर ये सब को ज्यादा लेके बैठेंगे. आप मिस्टेक्स नहीं करोगे तो एग्जामिनर ये जाने देंगे, 1-2-4 मार्क हटाएंगे. तो आपके फेवर में आने वाला है रिजल्ट फिर भी.
कि आपने कोर मटेरियल, कोर चीजों को बहुत अच्छे से फॉलो करा। बस रेडियल 1903, लेट्स लुक एट द चार्ट, एवरीवन लुक एट योर कॉपीज, दिल्ली से देख लो अकेला, एंड कालना अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से तो 150 कर सकते हैं अपन, 50, 100, 150, 200, अप्रोक्सीमेटली 200 में से मैं 25 माइनस कर दूंगा, 175 डीएमई आउटबाउंड दिल्ली हो जाएगा मेरा यहाँ पे। सो रेडियल 1903 डीएमई 175 आउटबाउंड दिल्ली, करेक्शन, DME 175 आउटबाउंड डेल्टा पापा नवंबर, फ्लाइट लेवल 310। बस खत्म, इतना ही मिस किया आपने और कुछ मिस नहीं किया, जिसके ऊपर आप अब सीख गए हो। आगे से इस चीज का ध्यान रखना। इट इज लाइक एडिंग सॉल्ट टू अ डिश, इट इज लाइक एडिंग मिल्क टू टी फॉर समवन हु लाइक्स मिल्क, इट्स लाइक एडिंग शुगर टू टी समवन हु लाइक्स शुगर। ऐसी बात है, इट्स लाइक हैविंग चीज ऑन पिज्जा, बिना चीज के क्या ही पिज्जा खाएंगे आप लोग? रोटी सब्जी खा लें फिर, है ना? ऐसा होता है। सो डोंट फॉरगेट, बाकी मुझे सब अच्छा लगा जैसे भी आपने सिचुएशन को एनालाइज करके किया है। डीएमई मिस किया, क्लाइंब नहीं बोला, पोजीशन बोला, कितने मार्क्स काट सकता हूँ? कॉल इज ऑलमोस्ट परफेक्ट। सो इन द वर्स्ट केस सिनारियो भी आपको यहाँ पे सीधा सीधा 14 मिलता। आई एम बीइंग स्ट्रिक्ट, एनी इंस्ट्रक्टर कैन गिव यू 15 ऑल्सो, 16 ऑल्सो। इन द वर्स्ट केस सिनारियो, इन द वर्स्ट केस सिनारियो, अगर किसी को रटा हुआ है, कोई नया एग्जामिनर बैठा है जिसको बोला है बाय द बुक ही फॉलो करो, जिसको खुद को आरटी नहीं आती, प्रोबेबली वो आपको 12 दे देंगे, उससे कम तो जा नहीं सकता। आई डोंट थिंक सच पीपल विल बी देयर इन एन इंपॉर्टेंट एग्जाम लाइक दैट। सो वी स्टिक टू दिस and safe so that we are not hard headed and we ensure we don't miss out on these things that have been told to you again and again, again and again, again and again, again and again. So good, but it was a top of client call and nothing else. We have a question, but we'll be taking questions in the end. So let's continue. Question number 3, over busbo, bad weather warning, receiver failure. Receiver failure, direct RCF, you don't have to call anyone else. You took a call, then you realized, good thinking. मैं तो बोलूंगा वो कॉल लेने से पहले 2 मिनट और सोच लो, फिर परफेक्ट कॉल दो, बट यू सेड डिसरिगार्ड, फाइन। डिसरिगार्ड भी आपको कैसे बोलना है? दोनों W1 W2 लेके डिसरिगार्ड बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे डिसरिगार्ड के पहले बोल सकते हो हैदराबाद कंट्रोल एयर इंडिया 90852 डिसरिगार्ड, क्योंकि उन्हीं को आपने कॉल बोला तो उनको बोल के अपना कॉल साइन लेके डिसरिगार्ड कर दो, फिर अपना कॉल स्टार्ट करो। कॉल अच्छा था, आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप नर्वस थे, आपको लग रहा था, बट यू मेंटेन्ड योर रेट ऑफ स्पीच, वेरी नाइस, आई रियली अप्रिशिएट इट। यू रिमाइंडेड मी ऑफ प्रखर्स मॉक, दिस इज वेरी नाइस एंड अच्छा था, इट वाज गुड। आपको लग रहा है आप स्लो बोल रहे हो तो आप ये एयरक्राफ्ट बोलना छोड़ सकते हो, एंड एक दो कंजंक्शन प्रेपोजिशन जो नीडेड नहीं है वो बोल सकते हो, बट आपका वो सब का टेंशन नहीं है। 15 सेकेंड हो रहा है क्योंकि पेपर थोड़ा लेंदी था, कोई इश्यू नहीं है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, डोंट वरी अबाउट द टाइम एट ऑल। पैन पैन के हिसाब से आपने बहुत अच्छा कॉल लिया है, कुछ ज्यादा इश्यू भी नहीं है, एंड जैसा होना चाहिए वैसा ही क्या है, एंड नेक्स्ट थोड़ा आपका अच्छा ही होगा इससे भी और। So with respect to that, I think this year also you get good score about 8 on 10 because it's just sub question. अगर ये पूरा क्वेश्चन होता तो 16 तो मिलते ही मिलते, शायद ज्यादा ही मिलते आपको। ऐसा है, कुछ इतना एरर है नहीं। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला आपको ऑलमोस्ट 20, आपने 18 मिनट्स तब तक यूज कर लिया था, प्रॉब्लम नहीं है, जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन के बाद पेस बढ़ जाती है एग्जामिनर की भी, हमारी भी, हम थोड़ा फास्ट भी बोल सकते हैं, वो हो जाता है हीट ऑफ द मोमेंट। जैसे कि एग्जामिनर बोल रहा था एक्सपेडाइट, एग्जामिनर खुद बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 5 बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग, क्यों रहे हो? तब आप आराम से कर रहे थे, मैं सोचा तो भाई इतना भी क्या आराम से कर रहा है, फास्ट कर, मैं बोल रहा हूँ तो फास्ट कर, आई डेंट वांट यू टू मिस आउट ऑन द पेपर, ऐसा। तो हमें कभी कभी असिस्टेंस मिलता भी है जो हम अपनी अच्छी क्वालिटी देते हैं, सुन लेने का, समझ लेने का, वो हिंट ले लेने का, वो देते हैं हिंट्स, अगर आप इतना अच्छा करते हो, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ओके, सो गुड जॉब ओवर देयर, आप समझे, आपने पुश किया। 15 सेकेंड ऊपर नीचे कोई कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, 8 मार्क मिले ना मिले हम टोटल स्कोर देख लेंगे, उसमें भी गलत था तो वी आर नॉट लूजिंग मच। यहाँ पे आपने बस गिव अप कर दिया थोड़ा बहुत, बट फिर भी बेसिक रखा। यहाँ पे क्या है, हैदराबाद कंट्रोल एयर इंडिया 908 मैं वही देख रहा था, हैदराबाद करेगा चेन्नई करेगा, डिपेंड्स आप अपने आप को कहाँ इमेजिन कर रहे हो। आपने अच्छे से बताया मैं नॉर्थ ईस्ट हूँ, मतलब अब मैं हैदराबाद आया ही नहीं हूँ, बैड वेदर हैदराबाद के ऊपर है, अगर आप यहाँ पे हो तो कंटिन्यू ऑन योर डेविएटेड ट्रैक टिल यू आर क्लियर ऑफ वेदर, इतना रिपोर्ट दे देते हैं आप बस,
बोलते मैं यहाँ हूँ, will be continuing parallel on deviated track till the time I'm clear of weather. Thereafter would request to rejoin that route to go back to go onward to my destination. लॉजिक यूज करना है बस. बट आपने करा यहाँ पे had deviated, यहाँ आपने ये बोल के गलती कर दी. हैदराबाद कंट्रोल एयर इंडिया 90852 नेगेटिव कॉन्टैक्ट विद एटीसी. नहीं, ऐसा नहीं. हैदराबाद कंट्रोल एयर इंडिया 90852 व्हेन ओवर बसबो, उस टाइम का टाइम, यहाँ पे कोई टाइम मेंशन नहीं है. सो टाइम नाउ यू शुड मेंशन इन योर क्वेश्चन नंबर हियर, व्हाट एवर योर टाइम इज वो लिख दो. बस वहां ही एग्जामिनर समझ जाएंगे. 0355 का फ्लाइट है, लेट्स हम यहाँ पहुंच रहे हैं 0430 आवर्स, ये लिख दो बस. ये टाइम को रेफरेंस लेके आगे के एस्टिमेट्स देने हैं आपको. सीख जाओ, ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं. अब मैं एग्जांपल देके आप लोग को बता रहा हूँ. तो ये मेरी टाइम हो जाती, ये डेविएशन की ऑल एयरक्राफ्ट को पैन पैन करने की. तो यहाँ हो जाता है ये क्वेश्चन ऐसा. हैदराबाद कंट्रोल एयर इंडिया 90852 एट 1 करेक्शन एट 0430 over Busbo received bad weather warning over Hyderabad, negative contact with ATC due receiver failure, had deviated on own to avoid weather, position 15 nautical miles right of Whiskey 20 northeast VOR Hotel India Alpha, would continue parallel on deviated track to avoid weather. Once clear, will call again. Flight level 313. Estimating clear of weather 0445. I have perfected the call with respect to the position you gave me. ये पोजीशन पे आपका ऐसा ही कुछ कॉल बनना है. अगर आप आगे बोलोगे विल कॉल अगेन, इससे अच्छा बोलोगे वंस क्लियर ऑफ वेदर वुड लाइक टू रीजॉइन विस्की 20 एट ओवर बोडेल, एस्टिमेटिंग बोडेल 0515, request weather deviation and route joining clearance and descend to flight level 310 at or before Bodel. Students, situational awareness. You have to put yourself in the cockpit to understand what's happening. Okay? क्योंकि ये आपने वहां बोला है. अगर मैं आपको बोलता कि आप इमेजिन करो दैट यू आर क्लियर ऑफ वेदर, तो आप अपने आप को कहाँ इमेजिन करते? पैरेलल आप आ रहे हो आ रहे हो आ रहे हो. पहली बात तो आपको राइट नहीं जाना था. राइट में देखो कितनी सारी रूट्स है. लेफ्ट में जगह खाली है, लेफ्ट चले जाओ, बेटर होगा. वेदर डेविएशन ऑन ओन कर रहे हो, इस हिसाब से लेफ्ट के साथ आप चलते रहोगे ना, तो हैदराबाद से क्लियर हो जाओ. हैदराबाद में आप रिजॉइनिंग क्लियरेंस मांग लो एस्टिमेट देके, एंड डिसेंड मांग लो 310 क्लियर. फिर बस बडाल आना है और चेन्नई आना है, एंड वहीं आपका हैदराबाद कंट्रोल से चेन्नई कंट्रोल चेंज हो जाएगा. डोंट थिंक ऑफ इट एज अ पेपर पेन एग्जाम, थिंक ऑफ इट एज अ सिमुलेशन ऑफ अ फ्लाइट, and it will make more sense to you with respect to how to come back. Now, compared to your call, again, if we have to just assess this call, ये नेगेटिव कॉन्टैक्ट ऐसे मत बोलो, हमें कंफ्यूजन हो गई. क्या नेगेटिव कॉन्टैक्ट? खुद ही फोन कर रहे हो, खुद ही नेगेटिव बोल रहे हो. फिर समझा है डेविएटेड, वाई वो मेंशन नहीं किया. टाइम बहुत अच्छा है मेंशन किया. टाइम नाउ का हम समझ गए हैं कहाँ लिखना है. पोजीशन आपने बता दी अपने हिसाब से बहुत अच्छे से. रिक्वेस्ट रिजॉइनिंग भी बोल दिया. So you did the needful instead of doing the wrong thing, and I really appreciate it. यही करना है एग्जाम में. एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है. How much marks are you losing here? If I have to actually think about your mistakes, तो फिर मैं बोलूंगा कि एयरक्राफ्ट बोलना जरूरी नहीं है, रूट ठीक है, पैरेलल ठीक है, टाइम नाउ कैसे करना है, ड्यू बैड वेदर बोल देना चाहिए था बस, नेगेटिव कॉन्टैक्ट पास्ट में बोल देना चाहिए था.
इतना कुछ एरर है नहीं, तुम्हें ऐसा लग भी रहा होगा एंड तुम्हारा कॉल मेरे कॉल से इतना डिफरेंट भी है, फिर भी यू विल बी सरप्राइज हाउ मच यू आर गेटिंग. Easily you're getting 7. At the least, you'll get 6. So you're still doing the right thing, and I'm very happy. Let's come back to the reply. We are giving you a hint. तुम रिजॉइन मांग रहे हो बट तुम तो वेदर से क्लियर नहीं हो, कहाँ रिजॉइन करोगे, तुम्हारा क्या इंटेंट है. नाउ यू आर द कमांडर, यू नो द सेफ्टी बेटर. मैं पूछ रहा हूँ और एटीसी पूछेंगे हमेशा आपको. तो आपने थोड़ा 10 सेकेंड से ज्यादा टाइम लिया रिप्लाई का. रिमेंबर 10 सेकेंड्स डेड एयर नहीं होनी चाहिए. आपने अगर रिप्लाई स्टार्ट कर दिया है फिर बीच में आप मुझे डेड एयर नहीं दे सकते हो. बट ये हो जाता है, एग्जॉशन, नर्वसनेस एंड ऑल, बट वी हैव टू अवॉइड. बहुत दिनों बाद डेड एयर सुनने में आया है. वेरी हैप्पी कि आजकल स्टूडेंट्स डेड एयर जरा भी नहीं दे रहे. एक आध बार आ गई तो चल जाता है, इट्स वेरी नॉर्मल. एक आध छोटे मोटे एरर्स चल जाते हैं, हमें कोई इश्यू नहीं है. वेदर ओवर हैदराबाद स्टिल बैड, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में. मैं शॉर्टकट में तुम्हें एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि वो वैसे पेपर तुम आराम से पास कर पाओ. So, weather over Hyderabad still bad. Would like to continue parallel on deviated track. Will report once clear of weather. And then position and done. Simple. और क्या ही करोगे तुम? कंफ्यूज क्यों होना? तुम्हें पता होना चाहिए मुझे क्या करना है एंड फिर वो करना है. बिकॉज एग्जामिनर को पता है चलो टाइम जा रहा है, उसको एक और बोलते हैं, एग्जामिनर विल बी इन योर फेवर. 3 मिनट भी नहीं बचे थे आपको तब तक, फिर भी आपने ऑलमोस्ट पेपर खत्म कर लिया. सो टाइम विल नेवर बी एन इश्यू बिकॉज लास्ट के कॉल्स आपके इजी कॉल्स ही होते हैं, सिंगल ट्रांसमिशन कॉल्स होते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 4 मुझे अच्छा लगा, पैन पैन, बट वही है वो कॉल अधूरा रह गया था. यू डिडंट से ब्रेक्स आर हॉट. वो लाउड नॉइस कहाँ से आया? क्योंकि टायर बर्स्ट हो चुका है. एंड टायर बर्स्ट हो गया, ब्रेक्स हॉट, स्टॉपिंग द एयरक्राफ्ट स्लोली, request firefighting services and emergency medical services on the runway where you have landed. So ये arrival report कम, pan pan call कम, tires hot, precaution comes, firefighting services का combination है. तो थोड़ा सिचुएशनल अवेयरनेस हमें और यहाँ पे बढ़ाना है बस. बट पैन पैन सही स्टार्ट किया आपने. एक्सपीरियंस लाउड नॉइस बिलो केबिन, सस्पेक्टिंग ब्रेक्स हॉट, नॉट सस्पेक्टिंग, ब्रेक्स हॉट इंडिकेशन तो आ ही रहा है कॉकपिट में. सस्पेक्टिंग टायर बर्स्ट, stopping the aircraft slowly, request immediate firefighting services and emergency medical services on runway 32. ऐसा. एंड आप कुछ नहीं कर सकते हो, रनवे थोड़ी देर के लिए ब्लॉक होने वाला है. बिकॉज टाइम लगेगा आपको वहां से निकलने के लिए. अगर ब्रेक्स हॉट हो जाते हैं, टायर बर्स्ट हो जाता है, फिर बाकी ब्रेक्स भी हॉट होंगे. फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज नहीं कर सकते ऐसे टाइम पर. तो बहुत 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 खराब चीज होती है वो. एक तरह से वहाँ ऑपरेशन हमारे रुक जाता है पीछे की एयरक्राफ्ट के लिए. तो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसमें बन जाएगा, यू हैव टू अकोमोडेट लैंडिंग एयरक्राफ्ट बिहाइंड यू. ऐसा भी आ सकता है. तो यहाँ पे आप थोड़ा और डाल सकते थे, बट यू स्टक टू द प्लान एंड आई लाइक इट. पैन 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 पैन, चेन्नई टावर, एयर इंडिया 95852, landed runway 320520. Brakes hot indication, suspecting tire burst due loud noise from below cabin. Stopping the aircraft slowly. Request emergency firefighting services and emergency medical services on runway 32. Passenger on board 19er, human organ transplant on board. Request further instructions. Airbus 320 heavy. अब कितना सिंपल लग रहा है ना कॉल. We are just a little away from perfect calls because we are still students and we are still learning. So this is our learning phase. Let's not judge ourselves because we are doing the right thing and this is how we learn. So tremendous job overall. And never say on standby. Just say where you are. On runway. उनको पता है स्टैंड बाय रहना है कि नहीं रहना. ठीक है. स्टैंड बाय मत बोलो, आप अर्जेंसी को थोड़ा और कम कर रहे हो स्टैंड बाय के हिसाब से, जबकि वो सही लग रहा है बट सही नहीं भी लग रहा है वाली. सो ओवरऑल यहाँ पे आपको ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, तो मैं 12 कम से कम दे ही सकता हूँ. तो नॉट बैड. स्टैंड बाय.
was talking in Mumbai language. चलेगा चलेगा. And Kanish, question number 5 start करने में इतना समय क्यों ले रहे थे? Sir, I don't know. I was writing question number 1, then थक गए ना? बस गिव अप कर दिया. बस मेरे no से sir, नहीं हो no रहा है. sir. AIS का भी फुल फॉर्म एकदम से गायब हो गया था. क्योंकि तुम खुद को, मेरे को लग रहा है, प्रेशर खुद को डांट रहे थे कि मेरे से मिस्टेक हो गई, मेरे से मिस्टेक हो गई. कर रहे थे क्या वो तुम? So for question number 3, bravo, yes. There is no room for regret and guilt. Not here, not in life. जो हो गया सो हो गया. Convince people that मैंने सही किया, मेरे को पास कर दो. You should be like that. You should not say मैंने कुछ गलत किया, because we should believe in ourselves. एक दो गलती होगी तो क्या है सर, जाने दो ना एक दो गलती, बाकी देखो ना, कर दो ना पास. This should be our attitude. जबकि हम ऐसे बात नहीं कर सकते उन लोगों से, but this should be our attitude to try. Sir, come on, I made a mistake. I hope you don't cut my marks. I realized it. Okay, सर जाते जाते बोल देने का क्या जा रहा है अपना, वो करे ना करे, वो तो वही करने वाले हैं. क्या पता उनको एटीट्यूड अच्छा लग गया, पता चल गया बच्चे को पहले मिस्टेक पता चल गई, 19-20 का फर्क होगा तो आपको पास कर सकते हैं. सो बी लाइक दैट स्टूडेंट्स. ओके, खुद के लिए फाइट करना सीखो, खुद को ब्लेम मत करो. इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग, अच्छी चीज करने का सबसे बड़ा यही फायदा होता है. यू हैव नथिंग टू वरी. और एक आध गलती हो गई तो क्या हो गया, क्या हो गया? अच्छा, आई एम जस्ट अ ह्यूमन, आई कैन फाइट फॉर माई सेल्फ. इसलिए तो रात को हम चैन की नींद सो सकते हैं ना. ऐसा होता है. सो डोंट डाउट योर सेल्फ. डाउट नहीं करोगे तो 2-3 मिस्टेक्स नहीं होंगी और अपना ही फायदा होने वाला. अलरफा, प्लीज एब्रिविएशंस मास्टर कर लो स्टूडेंट्स, बोलने की जरूरत नहीं है. अलरफा डिट्रेसफा का डेफिनेशन भी चाहिए, वो भी चाहिए. पार्ट 2 वाइवा में तो पूछूंगा ही पूछूंगा, ऐसा समझ लो. प्रोहिबिटेड एरिया, रेस्ट्रिक्टेड एरिया, डेंजर एरिया, ये कुछ बेसिक 15-20 चीजें हैं जो तो आप कभी बिना पढ़े जा ही नहीं सकते एग्जाम में. यू कैनॉट लीव इट टू चांस. एंड अपर कंट्रोल एरिया नई चार्ट्स में अपडेट में पड़ा है, टाइम लगेगा बट आगे भूलना नहीं है. आपने क्या बोला? अपर ट्रांजिट एरिया क्या बोला था? Upper टर्मिनल एरिया. traffic area. अपन अपना स्पेस बनाएंगे ना तो डाल देंगे नाम. हाँ, बट अभी ऐसा मत करो. बट ठीक है, कैलकुलेटेड गेस था, खाली तो नहीं छोड़ा. अच्छा लगा. जस्ट 15 सेकेंड्स कुछ, वो यहाँ थोड़ा स्लो हो गया ना एआईएस के वजह से. एआईएस कैसे भूल सकते हैं? नेक्स्ट 1-5 10 बार पढ़ते हैं हम हमारे नोट्स. नहीं बोल सकते वो चीज. सो पिक्चर मेमोरी इज द की. सो ओवरऑल गुड जॉब, वेरी हैप्पी. एंड ऑफ कोर्स यू माइट फील मैं थोड़ा और अच्छा कर सकता था, बट अच्छा है तुम ये देख रहे हो. तुम्हें लग रहा है मैं और अच्छा कर सकता था, और उससे कम क्या है, मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्लेसेंसी आ सकती थी जो आज के बाद नहीं आएगी. समझ रहे हो आप? सो देयर ऑलवेज अ चॉइस फॉर अस टू बी पॉजिटिव अबाउट समथिंग. वी शुड बिलीव इन आवरसेल्व्स. Questions, Kanishk? So how do you feel? Any questions, any doubts? No questions for now, but I'll work on the mistakes and improve calls in next mock. Okay. Okay. I'm not sure मेरा टोटल सही है क्या, but I'm getting 67 out of 92. मैं तो ऐसे ही जज करना है आरटी का एग्जाम के हिसाब से. Let's just check the calculator. If we minimize our mistakes, we realize where we could have gotten the points, and we realize that we are getting very close to 100. ओम बोलो, क्या बोल रहे हो? Yes, sir. In the question number third, Bravo, I think the call will go to Chennai Control because Hyderabad Control is still only flight level 255, and above flight level 255, we have Chennai Control till flight level 460. वेरी गुड. कनिष्क क्या बोल रहे हैं? ओम क्या बोल रहे हैं? ऑब्जर्व करो एंड टॉक टू हिम अबाउट इट. I observed it like after giving the mock. So another strategy that we have is understand the chart carefully before we take any call, so we'll not make such mistakes also.
सिंपल। इससे अच्छा है ना स्टूडेंट्स, अभी एवरी डे व्हाट यू कैन डू इज study all charts, and if you have any doubts send me a screenshot, send me a doubt and I'll clear it. डेली आदत बना लो, सुबह उठोगे तब क्लास करने से पहले सारे चार्ट्स देख लो, सारे सेक्शंस को एक एक करके देख लो। आपको पता है सेक्शन क्या, चार्ट को कैसे करना है, सेक्शनल बना के 1 क्वाड्रेंट, 2nd क्वाड्रेंट, 3rd क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट, ऐसे सिखाया है आपको। याद रखो, वैसे करने के लिए कुछ मिस नहीं होगा आपको। यहाँ पे आपके उस पे पॉइंट्स नहीं कटने हैं बिकॉज यू चोज योर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दैट यू कैलकुलेटेड एंड कॉल्ड। अगर हैदराबाद कंट्रोल नहीं रिस्पॉन्स करता, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बोलता, आरसीएफ करता, तो शायद तुम्हें चेन्नई कंट्रोल को कॉल करना पड़ता और तुम वो शायद फिगर आउट कर लेता। बट बिकॉज आपको एग्जामिनर ने ही टाइम नहीं दिया है और एग्जामिनर ने ही आपको रिस्पॉन्स दे दिया है, सो आपके मिस्टेक कवर हो गई वहां पर। अच्छी बात है, वो क्वालिटी की वजह से हुआ है। So keep up the quality, but avoid the mistakes to ensure कि मैं 90 के पास हूँ। Simple. Oh, very good point. I'm very proud of you. अगर आप चलो पेपर खत्म भी कर लेते तो 67+4 आ जाता आपको एक्यूरेसी के हिसाब से, तो यू वुड हैव इजीली गॉट 71। और देख के अच्छा लगता भाई ये 67 भी वही वैल्यू, वही वही है आपका। अच्छा करा। यहाँ मेरे हिसाब से 70%, 80% दे विल पुट यू टू पार्ट 2 इजीली। मुझे नहीं लगता 67 पे विद दिस क्वालिटी कोई आपको फेल करेगा, पॉसिबल ही नहीं। आपको लगेगा सर मेरा अच्छा नहीं गया है, वो आपका नाम अनाउंस करेंगे एंड दिस इज व्हाई यू विल सी फर्स्ट टाइम पीपल विल से सर पता नहीं कैसे पास हो गया, मैं तो पेपर में को लग नहीं रहा था होऊंगा। मैं बोला देखो ऐसे आपने क्वालिटी मेंटेन करी है ना, इसलिए आप साफ दिख रहा है ये चीज। Let's not get hard-headed. Let's realize whether deviation procedures, rejoining procedures, RCF procedures, deviation on your own procedures, practice them. If you have any doubts, discuss. Don't struggle and don't stay with that struggle. Then फिर मेरा काम ही क्या है वाली बात हो जाती है। All right, students. Other than that, I don't think there's a problem. Kanishk, message me when you'll be ready for your part 2 mock, and accordingly we'll be scheduling. See if it's possible for this week. If not, then earliest next week. But this week will be better. Part 2 ही करना है सर। Kanish, any questions? Negative, sir. कैसा फील हो रहा है अब भी पार्ट 1 को लेकर so far? Feeling good. Like I know I can improve it, so I'm not stressed about second time. Sweet. Let's take some questions. Students, whoever wants to leave can leave. Okay, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का कोई डाउट है भेज दो, बाद में भी रिजॉल्व हो जाएगा। बस ये डाउट्स खत्म करेंगे, लीव करेंगे। 6 बजे का टारगेट रखता है। सुपर फास्ट डाउट्स रिजॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग प्लेलिस्ट पे वीडियो को रिप्ले कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, सुन सकते हो, है ना। वी कैन कोऑपरेट एंड बी लाइक दैट। एंड एनीवे आपके पास मैं हूँ 24/7। डाउट्स तो आपके और कहीं नहीं जा रहे हैं, पूछ सकते हैं। प्रखर is asking one doubt, sir. I have a doubt not related to the mock but related to RT question. How do you transmit 50% in RT? It was a question in RT book 12 and was unanswered, and in RT manual also. Students, I would want everybody to give me a WhatsApp possible answer for this. How would you transmit 50% in RT? देखते हैं क्या आंसर्स आते हैं। प्रखर पार्किंग लॉट में रखो इसको, ठीक है। Kalna he talked with Delhi control. Shouldn't he be talking to Gwalior control? देखते हैं। ग्वालियर में कोई कंट्रोल नहीं है, ग्वालियर में टावर है। ऐसे टाइम पे नियरेस्ट कंट्रोल कौन है? आधे दूर जिससे आ रहे हैं उससे बात होती है, एंड आधे दूर जिसके पास जा रहे हैं उससे बात होती है। तो यहाँ पे हम दिल्ली से बात कर रहे हैं। कालना आने के बाद, इबानी आने के बाद हम दिल्ली को बोलेंगे टाटा बाय बाय, और वहां से हम नागपुर कंट्रोल में आ जाएंगे। ग्वालियर के पास कंट्रोल है ही नहीं, सो लेट्स बी केयरफुल अबाउट इट। ग्वालियर कंट्रोल आएगा ही नहीं। 2 ही कंट्रोल आएंगे, या तो दिल्ली, या तो आगे वाला नागपुर, या तो पीछे वाला, या तो आगे वाला। दिस इज एग्जैक्टली व्हाई मैंने ये चार्ट दिया, ताकि हम ये डिस्कस कर पाए। आदित्य, एक्सीलेंट क्वेश्चन। ओम ने मुझे आंसर दिया है 50%। आई थिंक इट साउंड्स गुड टू मी। मैं से बता रहा हूं, देखेंगे आप लोग, सब लोग भेजो आंसर्स तो आपको मिले जाएंगे। आदित्य, डाउट क्लियर? AIS, okay. Upper control area, good job students.
Alert phase, Niharika, good job. Upper control area, good job. Prakar, good job. UTA. Prerit, inbound, upper control area, very good. Khalil, very nice. एंड आदित्य किसका डेफिनेशन दिया है? एप्रीहेंशन, अलर फा का दिया डेफिनेशन, गुड जॉब। चलो ठीक है, और कोई क्वेश्चंस है नहीं, स्टूडेंट्स है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास टुमारो। वी आर मीटिंग लाइव 4, इन केस एक्सटेंड होगा तो 4:30 को स्टार्ट हो जाएगा। सेम थिंग आरटी लाइव, ठीक है? जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना मत आओ, बस मुझे लूप में रखो। जिनके मौक है वो तो आएंगे ही आएंगे। That being said, students, I'll take your leave and thank you for being such a nice class. क्या बोल रहे हो हुसैन? Sir, just a reminder to send me the link. Google Drive. What link, बाबा? Sir, the BK7 to BK15. पहले मुझे पार्ट 1 का मार्क चाहिए, उसके बाद पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 1 Oh. कहाँ चल रहा है? और सर गाना क्यों गा रहे हैं मुझे नहीं पता, बोलो जल्दी। Okay, sir. कब दे रहे Understood, हैं sir. पार्ट 1 का मॉक? कब दे रहे हैं? So I need to prepare. I'm not yet prepared. अप्रैल में है ना तुम्हारा एग्जाम? Yes, sir. तो अप्रैल का वेट कर रहे हैं? Uh, नेक्स्ट वीक सब अप्रैल वालों का मॉक स्टार्ट हो रहा है, चूज कर लो डे, मंडे टू फ्राइडे के बीच का नेक्स्ट वीक, ठीक है? okay, sir. प्रैक्टिस मॉक है, जितनी भी तैयारी है उस पर दे देना, ओके? उसके Okay, बाद sir. तुम्हें पार्ट 2 मिल जाएगा, फिर पार्ट 2 पढ़ाई करना। Okay, sir. Thank you. मोस्ट वेलकम। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? Bhagat, Khalil, students attending live for first, second time, please message me your feedback. Yamuna, how much is your preparation and what's your availability till night? Please message me. And Niharika, if you have any doubts, questions, update me on your part 1 prep and confidence levels. Jyotsna, please update दे दो मुझे personal level पे क्या 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 नहीं है. You have the freedom, don't worry. Family needs you. प्रेरित, एक बेसिक अपडेट मुझे आज छोड़ दो, क्या चल रहा है क्या नहीं, कितना क्या है। ओम, मेरे को आर्टिकल का फुल अपडेट चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर कॉन्फिडेंस, एंड नेक्स्ट वीक मॉक कब दे रहे हो? मेरे को डेट चाहिए, डे चाहिए, टाइम मैं आपको बता दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आदित्य अपडेट्स आ गई हैं, पार्ट 1 मॉक कब दे रहे हैं, नेक्स्ट वीक का डे मुझे आप भेज रहे हो। खलील, आपका मॉक मैं इसी वीक लेने वाला हूं, सो फ्राइडे तक कौन सा डे आप यूज कर मॉक दोगे मुझे, प्लीज वो वापस एक बार मैसेज कर दो, ठीक है? एवरीवन कवर्ड? चलो, I'll take a leave, students. Let's enjoy our evening. I'll go attend an emergency and come back and continue with the sessions. Bye bye and see you. आज मैं जल्दी जा रहा हूँ, ठीक है? Bye. Good evening, sir. Same to you. Thank you so much.